YouTube channel. Let's start with new video. In this video, I'm going to tell you about the use of would. How to use would for different purpose in different way. And how to use would have plus third form of the verb for different purpose, which express present moment, which express wishes, which express polite request and many more action. Dear student, before talking about the different uses of would and would have, in my previous video I was telling you about the use of could and could have. How to use could and could have to expressing the past time, past action, expressing request, use of could in narration, suggestions, in idioms, and for so many other things. Same is here, dear student. In this video, I'm going to tell you about the use of would and would have plus third form of the verb for different purpose in different way. Dear student, although we have studied all these model in our conditional sentences, still grasp the core of these model one more time, dear student. Stay with me till the end of this video to know that how to use would and would have. Don't forget to subscribe my channel by rating D-Himta, like, share and comment. डियर व्यूअर्स, वुड का यूज विल के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है. वुड विल का पास्ट है. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर विल को वुड में बदलते हैं. हाउ? लेट्स सी. ही सेड आई विल बाय दिस कंप्यूटर. He said, I will buy this computer. Right? How to change this will into would? He said that he would buy that computer. Mr. Sinha said, the guilty will be punished. Mr. Sinha said or assured that the guilty would be punished. Let's see some more examples. Like Adya said that she would bring the drinks. He told that he would go to Jaipur the next day. He told me that she would not agree to the proposal. Dear student, I hope you understood that how we can change will into would. हम भूतकाल की अपनी किसी आदत का बोध कराने के लिए भी would का यूज करते हैं. Like when I was a child, my grandfather would tell stories every day. Gandhi ji would spin every morning. Gandhiji would spin on his wheel. The cat would sit for hours in wait of rats. When I was little, I would play with my friends. जब मैं छोटा था तो मैं अपने मित्रों के साथ खेलता था. Dear viewers, these are some such examples which let us know about our repeated action of past or our past habits. इसका फॉर्मूला देखिए कि मेन क्लॉज, then would and then सिंपल वर्ब. वुड का यूज हम दृढ़ संकल्प दर्शाने के लिए या बतलाने के लिए टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशंस. लाइक आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल. आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर ए क्रिमिनल. व्हाटएवर मे हैपन, आई वुड डू इट. कुछ भी हो मैं यह करूंगा. राइट? ये एग्जाम्पल हमें डिटर्मिनेशन और हमारे दृढ़ संकल्प को शो करता है. नाउ वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ would is to express polite request. विनम्र अनुरोध एक्सप्रेस करने के लिए would का यूज प्रेफर किया जाता है. How? Let's see. Would you help me? Would you mind closing the door? Would you accompany me to the railway station? Would you send me an application form? Mr. Sharma, would you please come to the desk and address the people? I should be very much grateful if you would let me know the details of the institute. Dear viewers, these were some interesting examples which let us know that how we can use, कैसे हम would का use अपनी request express करने के लिए use कर सकते हैं. Now, how to express wish, offer, invitation, preference, choice. प्रस्ताव, आमंत्रण, चुनाव या पसंद बताने के लिए would का use किया जा सकता है. There are so many way to use would here. First of all, let's start with if you want to express your wish. अगर आप अपनी इच्छा, want को नम्रता पूर्वक politeness के साथ व्यक्त करना चाहते हो तो you will use would like. Like I would like to help her in her studies. You would like to say that
he is honest. I would like to say something. Dear viewers, these are such examples जिसमें आप कुछ चाहते हो. So there is a formula for such sentences. Subject plus would like plus object. Okay, like I would like the ABC. I would like to do that things. Okay, अगर आप invitation या offer दर्शाना चाहते हो politely, so there is again formula. Okay, but before this formula, see some examples like would you like 2 cups of tea? Would you come with us? Would you like some rice? Or would you like a salad with it? So formula is would you like plus object. Sometime asking someone to do something. कभी कभी हम दूसरे आदमी को कुछ करने के लिए बोलते हैं like would you please pass the jelly? Would you please pass the jelly? Asking someone to do something, would you mind passing the jelly? इस तरह के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला है वुड यू माइंड प्लस जीरंड. जीरंड क्या होता है? जब हम आईएनजी लगाते हैं किसी वर्ड के साथ प्लस ऑब्जेक्ट है. अब हम प्रेफरेंस की बात करेंगे. प्रेफरेंस मीन्स हियर कि जिसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं. आई वुड रादर डाई देन बैग. भी बैगिंग की अपेक्षा में मरना पसंद करूँ. आई वुड प्रेफर टू फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन. परीक्षा में नकल करने की उपेक्षा मैं फेल होना पसंद करूंगा. शी वुड रादर प्ले देन गॉसिप. की भी गॉसिप की उपेक्षा वो खेलना पसंद करे. आई वुड रादर रेस्ट नाउ. आई वुड रादर स्टडी देन सी अ मूवी. आई वुड रादर प्ले देन रेस्ट नाउ. डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है कि हम किस तरह से वुड का यूज़ प्रेफरेंस के लिए अपनी प्राथमिकता दर्शाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. लेट्स सी द यूज़ ऑफ वुड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी. संभावना व्यक्त करने के लिए. ही वुड बी हिज फादर. ये उसके पिताजी हो गए. ही वुड बी कमिंग बैक. वह वापस. शी वुड बी 30. वह 30 वर्ष की होगी. दे वुड बी रियल टेररिस्ट. वे लोग वास्तव में आतंकवादी हो गए. She would be cooking now. She would be in the club at this time. Would be यहाँ पर इन सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि ये संभावना व्यक्त करते हैं कि शायद ऐसा कुछ होगा. Now move on to the next point. विश के साथ would का यूज करके स्ट्रॉन्ग डिजायर और विलिंगनेस स्पष्ट की जाती है. कैसे कर सकते हैं? I wish you would fight this election. I wish you would support her fully. I wish they would agree to this proposal. जब हम इस I wish को यूज़ कर रहे होते तो it means काश. या इसको कुछ इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं would that. काश I were child again. काश मैं दोबारा बच्चा हो जाता. would that she were my beloved. काश वह मेरी प्रेमिका होती. अनरियल या काल्पनिक परिस्थितियों को एक्सप्रेस करने के लिए would का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है. कंडीशनल सेंटेंसेस पे हालांकि पहले ही वीडियो बनी हुई है. स्टिल आई वांट टू टेल यू एंड वांट टू गिव सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन यूज वुड टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशंस. इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज. अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होता, आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट. इफ क्लॉज, ओके, देन मेन क्लॉज बाय यूजिंग वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इफ आई वर रिच, आई वुड हेल्प द पुअर. If I had wings, अगर मेरे पंख होते, I would fly to Europe. Okay. If I were the king, I would make you any chief advisor. If a tiger came into the room, what would you do? If I were a bird, I would fly very high. If you left your bicycle unlocked, someone would steal it. Dear viewers, these were some examples जो हमें अवास्तविक, अव्यवहारिक परिस्थिति बताते हैं जिसे हम वुड के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं.